ऑटोग्राफ उसको मैं इधर पकड़ा रहा हूँ, उतनी देर में वो मुझे किस करके भाग गई. Okay. या I love the echo scene. अरे इसीलिए मैं पहले आया. भिंडी. I think सर उस सीन की एक तो the thought या और दिल्ली में है और दिल्ली में शूट और दिल्ली में शूट कर रहे हैं और स्कूल यूनिफॉर्म में. और स्कूल में और पिक्चर का टाइटल है फुकरे. और हमारा डे 1 एक्चुअली गर्ल्स कॉलेज में था. Hey hello everyone, this is your Bollywood spy यानी कि आज दिल का सुलगाम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है the latest talk in the town, that's Fukrey की कमाल के 3 trios, you know, Pulkit Samrat, Richa Chadha, Varun Sharma. सबसे पहले तो congratulations, मैंने फिल्म देखी और मैं I don't remember last time मैं इतना हंसा कब था, because जैसे मैं सांस ले रहा हूँ next scene आ रहा है, I'm laughing and it just laugh and laugh. लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा reaction, first reaction and feedbacks किस तरह के आए? First of all, thank you so much. Means a lot. पूरी 400-500 लोगों की टीम होती है जो फिल्म बनाती है. And if collectively we are able to make you guys laugh, it's the best feeling in the world. And the reactions are just immensely good. We are just filled with gratitude. Yeah. And मतलब मुझे लगा था जब बहुत लोग हंसते हैं तो आप भी हंसना स्टार्ट कर देते हैं. Okay. But literally there have been like tears of joy right now. I think firstly thank you so much, आपको इतनी अच्छी लगी. And I think हमने जब collectively पहली बारी as a team ने देखी थी, I think it was a very emotional moment for all of us. You know, because this is one film which is very special to all of us. It is one film which मतलब वो बहुत जुड़ी हुई है हम सबके साथ और शुरुआत वहां से हुई थी. तो third time to see the same characters coming together and you know going through that entire madness, I think it was very emotional. Plus, I think there was a lot of laughter. That is the most beautiful thing. All our families really liked it, and they really enjoyed it. And on top of that, I think everyone. It is that film where collective viewing में जब आप देखते हो और एक थिएटर के अंदर वो हंसी की गूंज होती है, laughter होते हैं, giggles होते हैं. It's just a very beautiful and a very you know soothing feeling. So I think we all are just very happy and you know like we're very thankful that people have liked the film and they are like enjoying it and they're liking it. Richa? मैं आपके साथ ही थी हॉल में. जी. मैं आप लोगों के भी रिएक्शंस देख रही थी पीछे बैठ के बिकॉज आई वाज आल्सो नर्वस और आई थिंक आप दोनों मेरे बगल में बैठे थे. ऑन माय राइट सो आई वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग ये लोग हंस रहे कि नहीं पंचेस पे. About them कि यार इतना हंस रहे मुझे डायलॉग मेरे नहीं सुनाई दे रहे. नो नो आई वाजंट मैं तो कंप्लेनिंग. ताली बजा रहा था, क्लैप कर आप ताली बजा रहे थे, सीटी भी बजा रहे थे आपके पड़ोसी. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि हर एक को थोड़ा लाफ्टर फन जॉय चाहिए होता है और काफी समय से मतलब एटलीस्ट बड़े पर्दे पर ऐसी फिल्म नहीं आई है दैट इज unanimously liked by the family and like it can be you know I think last we had a spate of this बधाई हो and all those films के उनको भी कुछ साल हो गए. कोविड. हाँ प्री कोविड आई थी वो फिल्म है जो मतलब फुल फैमिली ऑडियंस एक साथ बैठ के एंजॉय कर सके. उसके बाद कहीं ना कहीं नहीं तो मैंने कहा उस प्री कोविड जो फिल्म आई उसके बाद this is the first time I think that everyone can enjoy together. So I'm very excited. I'm very relieved also, frankly, because this film took a lot of time to make. We all worked very hard. We all got sunburned, got our skin peeled. Our director became like super obsessed with his work. He's become a zombie for the last 4 years. So it's a big relief to all of us. बट एक आई थिंक 6 years यू नो लास्ट फ्रेंचाइज जो आई थी जब इस तरह की ये वैसी कॉमेडी फिल्म नहीं है जहाँ पे आपको यू जस्ट हैव टू डिपेंड अपॉन द राइटिंग. यू नो राइटिंग के साथ साथ आप तीनों की एक मैनरिज्म्स है, आपकी एक अलग अलग सबकी एक अलग अलग पर्सनालिटी है. तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है पीपल लव दैट कैरेक्टर्स. हर एक का अपना अपना एक फेवरेट कैरेक्टर होता है. उस ट्रेड्स के अंदर जाने के लिए कितना टफ होता है बिकॉज डू यू हैव टू वॉच दोज अर्लियर पार्ट्स अगेन क्योंकि बीच में आप लोगों ने काफी काम किया हुआ है. अगेन गोइंग बैक गेटिंग दैट राइट थिंग वो बहुत टफ हो जाता है बिकॉज ये जैसे मैंने कहा सिंपल नहीं है आके सिर्फ डायलॉग्स बोलना है बट वो चीज बॉडी मान योर रिएक्शंस योर दैट एंटायर प्लॉटिंग वाला वो चीज पूरा लाना और आपके अंदर वो जो सिंपलिसिटी एंड दैट नाइवनेस वो बहुत टफ हो जाता है. हाउ वाज इट फॉर यू गाइस? When we got the narration, then we started doing the readings together. After the first reading, Brig was like, "अबे कहाँ से तुम्हें लेके रहूँगा सेट पे वापस यार?" Then we watched the film again. We watched the first part. We watched the second part. We again went into the world. We were engrossed by it again. And then we just simply surrendered ourselves to Mrik.
He's the captain of the ship. He knows exactly what path to tread, where what are the possible icebergs that you can face during this journey. So he takes care of everything and makes it a cakewalk for us. We just have to wholeheartedly surrender to him. He's the boss. Okay. So we literally, like, all the characters have actually come out of him. He's co-written it with Vipul, and he knows each and every beat, each and every joke, each and every brick of the set. He knows everything about the film. He's breathing it and living it since last 5 or 6 years, and you just simply surrender, and he takes care of the rest. Okay. Richa? With Brig, I think she's very hard taskmaster. Let me not lie. He's very particular, very specific, and he's also one of the writers of the script. Ji. So he understands every pause, every dot. He will not let you stray from it. क्योंकि कॉमेडी फिल्म में टाइमिंग ही तो सब कुछ है. जो पॉज में लोग घुस रहे हैं, अपने अपने जोक्स बता रहे हैं. आपने देखा होगा ट्रेलर में कुछ जोक्स थे जो फिल्म में उनका एलैबोरेट वर्जन आप देखते हैं, आपको पता है उसकी पंच लाइन क्या है, फिर भी आपको हंसी आती है. True. चाहे वो ल वाला जोक हो या बर्फ के गोले वाला जोक हो या जो भी पंच लाइन हो, मतलब फिल्म में दे आर प्रॉपर्ली स्ट्रेच्ड आउट एंड बट यू स्टिल लाफ इवन दो यू नो व्हाट द एंड इज गोइंग टू बी. एंड आई थिंक दैट्स द मैजिक ऑफ अ गुड राइटर एंड अ वेरी वेरी पर्टिकुलर डायरेक्टर. एंड रही बात कैरेक्टर्स को पकड़ने की, तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं. वी हैव टू डू इट. हम लोग सब फर्स्ट फ्यू डेज में, क्योंकि वो हमारी तीसरी फिल्म थी, आप अभी भी पार्ट 1 देखेंगे ना, उसमें एक रॉ फ्रेश एनर्जी है उन लोगों की जिनको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, तो वो रिस्क लिए जा रहे हैं. हाँ. वो कैसे भी करके गाली भी दिए जा रहे हैं, खुश हुए जा रहे हैं, एक दूसरे में केमिस्ट्री भी बना रहे हैं. नाउ आई फील लाइक वी ऑल अंडरस्टैंड आवर कैरेक्टर्स आल्सो. आई अंडरस्टैंड बोली, ही अंडरस्टैंड्स चूचा, ही अंडरस्टैंड्स हनी. सो व्हेन वी ब्रिंग इट टुगेदर यू कैन सी दैट देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन द कैरेक्टर्स आल्सो. सब वैसे नहीं है जैसे पार्ट 1 में थे. जैसे आम जिंदगी में होता है, लोग बदल जाते हैं 6-8 साल में या 2-3 साल में, तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है, कैरेक्टर्स के साथ भी यही हुआ है. I think the same thing. I think they've said everything. But I just have one beautiful thing that I felt and experienced once people saw the film. And they just immediately, they're like, भाई तुम लोग बड़े ही नहीं हुए हो क्या? So it was so beautiful as a compliment. कुणाल खेमू भाई ने जैसे ही आए थे, first reaction he's like, भाई तुम बड़े नहीं हुए हो. Because even in the film, like when there's a pre-cap that happens of the first one, then the second one, and then you start off. So it's just most beautiful feeling as a compliment for all of us, and especially to Mrixer, is that the essence of the characters, the innocence, and that nuances of it, you immediately dive into back in. And I think the process, as they said, that happened. So it's nice that वापस जा सके. I hope चौथी भी बने तो वहां तक सेम ही रहे. हर एक का पर्टिकुलर फेवरेट सीन होता है. इस बार मैं अपना, अगर आप तीनों के सीन्स की बात करूं जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लाइक इट्स वेरी टफ. योर इज व्हेन दैट अंबरसरिया सॉन्ग वहां पे आता है और जो रिएक्शन पूरा जो आपके ऊपर जो दिखा है कि ओके माय सॉन्ग इज गेटिंग अवे, वो वाला था. योर दैट शादी के बाद वाला फन डांस, दैट वाज लाइक क्रेजी. एंड योर्स तो ऑफ कोर्स दैट अम्यूजमेंट पार्क में वाटर राइड, आई गेस उस तो हम लोग हंस हंस के पेट. बट आप लोगों से जानना चाहूंगा व्हिच वाज योर फेवरेट सीन के बहुत मजा आया वो करते हुए. Favorite scene? Yeah, please. वरना तो मेरा ले लेगा. I love the echo scene. अरे इसीलिए मैं पहले आया. भिंडी. I think sir उस सीन की एक तो the thought. Yeah. Hats off to Mrixer and hats off to Vipul bhai for that. The thought, and more importantly, it's the execution Ji. of that thing. It's bizarre. It's bizarre that that thing. And I love Mami. I think the Mami's character is so beautiful and it's so innocent, and everyone's there. And I think overall the whole scene ka package, I think for me it is like one of my favorite. If you ask me, one of my favorites. Richa? I mean, I like a lot of scenes, but I actually love the scene in which Manjot gets called a left hand. Yeah. I think we associate a lot with it. वो है नहीं ना यहाँ, है नहीं, तभी भी हम चल रहे हैं. He is low, left out. I think उसका favorite scene will be that airport वाला scene जब हाथ से पानी पे डालते हैं. The Chullu scene is his favorite scene. Yours?
I feel my favorite scene is when Pankaj ji is basically breaking the fourth wall. That is hilarious. It is so nicely done, and it was improvised on the set. God, It that was was not so a part good, of the yeah. script, of course. So when they were doing that scene, so Pankaj ji just Rick and Pankaj ji sat down. They were doing some discussion, some jugalbandi, and this is a very good example of how filmmaking may magic happens. This is how magic happens. When the director and the actors and the entire crew, they are in sync, they want the best to come out. And that's what happened with that one. When Pandit ji just gave that expression, Mrig is like, yahi rakhenge. Let's keep this. You So know, I really like that. audience have become so smart because वो जो सब scene आता है तो सब लोग अच्छा अच्छा ये and the next moment when he does this Correct. it's like jackass. But आपने जो बात की जो first part की जब शुरुआत हुई थी तो I would like to let's revisit and first day of set पे क्या था वही chemistry थी कैसा था nervousness था क्योंकि as you guys did not know anything कि इतना बड़ा first मैं फुकरे 1 की बात कर रहा हूँ Fukrey won. फुकरे 1 day 1 Oh my God. नर्वस थे ऑब्वियसली बिकॉज भाई फुकरे वन में तो हमारी फट गई थी भाई. हाँ We हमने were उससे पहले बहुत रीडिंग्स करी थी साथ में वी वर अ लॉट प्रिपेयर वी वर प्रिपेयरिंग अ लॉट वी डिड अ लॉट ऑफ रीडिंग्स इंडिविजुअली विद मिरिक सर टुगेदर ऑल ऑफ दैट बट जैसे रिचा ने बोला सर हम जब पहले हमने स्टार्ट भी करी थी सिर्फ फर्स्ट डे नहीं पूरा प्रोसेस ही and even till third for that matter first second and third we've all as actors have surrendered to Mrik sir and if you liking something a lot of credit maximum of it goes to him for getting those characters out of us but we were just very happy that we're doing a film together and Excel's backing it up and मजे आ रहे हैं और दिल्ली में है और दिल्ली में शूट कर और रहे हैं. दिल्ली में शूट कर रहे हैं और स्कूल यूनिफॉर्म में और स्कूल और पिक्चर का टाइटल है फुकरे और हमारा डे वन एक्चुअली गर्ल्स कॉलेज में था. इट इज लाइक लिटरली दिल्ली में चाहे आप डीयू में पढ़ते हैं चाहे आप स्कूल में पढ़ते हैं सारे लॉन्डो का दिस इज वन ऑफ द ड्रीम्स. Miranda College. You want to see what is on the other side of the wall. Okay. What happens on the other side of the gate. Actually, And- because boys are not allowed. I'm from Yeah, South boys are not Campus. allowed. It's very strict. Boys are not allowed, and the fences are also quite high. So, Lady Shri Ram College, Miranda House, ये लड़कों के लिए बहुत वो shrine बन जाते हैं. We वो Londoners मत्था were टेकने in जाते that college. Day one, we were shooting there. We shot there for I think 4 days. Yeah. We shot the entire song also for 2 days over there. रब्बा वो शॉट It was Okay. just, it was like dream come true. बहुत अच्छा Everything ballet was किया just था falling आपने. in place. Richa, you remember yours? My first day was crazy. I got cast a little bit last minute. Okay. Because of another very interesting story, but another time. But हम पहुंचे सुबह 4:30 बजे उठ के वहाँ जामा मस्जिद के सामने मैदान है और एक तरफ राजघाट है एक तरफ चांदनी चौक है तो मैं बैठी थी गाड़ी में मैंने कहा देखते हैं क्या कराएंगे डायरेक्टर बड़ा फिनिकी है बड़े रीटेक लेगा ऐसा मुझे लग रहा था I was quite nervous and the boys and I were I think purposely kept a little bit far away so that there's that intimidating energy. I had just come out of Gangs of Wasipur. No one really understood how old I actually was or what I was really like. And then कट्टू सुबह 6 बजे रिक्शे में हमें बिठा के क्योंकि गलियां बहुत तंग है रिक्शे में बिठा के ले गए एक 4 मंजिला मकान था जो गोली का अभी भी यू कैन सी इट्स सिमिलर सो मेरे को ऊपर ले गए और बोलते आप शुरू करो आपको बोलना है दल्ली 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 वो वाला सीन शुरू हुआ तो आई वाज लाइक ओके आई एम फ्रॉम सेंट स्टीवेंस कॉलेज आई वाज लाइक आर यू श्योर इज दिस कैरेक्टर इज दिस मतलब इट वाज अ लिटिल बिट व्हाट इज द प्रोसेस इज लाइक भूल जाओ गंदी औरत ये तुम्हारा ब्रीफ है and I went 6:30 in the morning. I started screaming, top of my voice. Some people were placed there, Okay. but rest बंदे अपने घर से उठ के कि कौन चिल्ला रही है पागल औरत हुडी पहन के और 2 घंटे चिल्लाई जा रही है because we had to shoot it from like 6:30 to 9:30. Then it was done. So all morning I'm just like दली cut. I'm so sorry. I'm sorry अपने बच्चे को नीचे ले जाइए वगैरह वगैरह मेरे तो that day I'll never forget. It got me over my inhibitions like this because आप सुबह सुबह लोग उसी आवाज से उस जय जयकार से उठ रहे हैं अपने अपने People घर do से. laughter therapy. They Yeah. go for morning walks. यहाँ गालियाँ थे
ओके, यू नो रिसेंटली लॉकडाउन के वक्त फ्रेंड्स का रीयूनियन हुआ था और उनसे भी उसमें पूछा गया था कि विच कैरेक्टर यू नो बिसाइड्स योर इज योर फेवरेट और वुड यू हैव डन इट। तो आप लोगों से जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कमाल के कैरेक्टर्स, इवन योर बॉडीगार्ड्स आर लाइक दे हैव देयर ओन फैन फॉलोइंग, उनकी एक अलग चीज है। सो अगर आपका रोल छोड़ के कोई कौन सा और कैरेक्टर है विच यू वुड लव टू एक्सप्लोर, मे बी हो सकता है फुकरे 4 में कुछ तो चूचा ऐसे कुछ कमाल कर दे कि सबकी सोल्स चेंज हो जाए, समथिंग लाइक दैट। सोल ही चेंज। या मेरा बहुत वियर्ड सा आंसर है, हाँ. but this is genuinely I believe that I would love to play a character like, Okay. just forget Yeah, the yeah, gender of part, course, yes, yes. right? Because it is not an easy character to play. True. You have to be humorous, witty, comical, but you still have to maintain the threat. Yeah, that shrewdness also. Yes. And Bholi also has instances where you see her vulnerability. There are so many layers, and it's very challenging for an actor, and I really believe that she's very very क्या बोलते हैं उसको, brave. She's very brave to take on the character of Bholi and to do it with such a finesse. It's just, yeah, really, I feel that. Good job, ma'am. Good job. Yes. Richa. Me? I actually I would love to play Pandita or even shall I say Honey now that gender is not a problem. Gender is not a problem. I would love to play Honey Say because only anything, huh? Which is the problem? और तो चूचा की मम्मी है। चीरा की मम्मी who hates me. But Honey I would love to play पे first part में भी बड़ा हीरो बनता है, सीढ़ी वीढ़ी टैप के जाता है, गाल में यूं यूं कर रहा है, पर एंड में वही निकलता है ना फुकरा। मेरी मम्मी ने बोला नौलखा हार है, देखो मेरा नौलखा हार, देखो मेरा नौलखा हार। So you understand that at the core of it, वो जितना भी शाना बने, he is innocent. True. So I love that about the Honey character. I think लाली सर। Seriously? हाँ वो बड़ा क्यूट है और एकदम इनोसेंट और एक्सप्रेशन से लगती रहती है, और मैं भी फील करना चाहता हूँ कि अगर मैं चूचे के चक्कर में फंसूंगा तो मैं कितना ही क्योंकि हम असल जिंदगी में वो चूचा और मैं, हम लाली है। Correct. असल जिंदगी में Yeah, his life, yes. in real real life. अच्छा. Manjot is चूचा, Okay. Pulkit, Richa and me are We are Lali. लाली। वो हमको इतना परेशान करता है, तो वो एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा ट्रांसलेट कर पाएंगे आई थिंक। But he's done very well in the film. He's fantastic. अरे वो एक्सप्रेशंस ऐसा लग रहा है अपने के मारने लग जाएगा। फैंस जब आते हैं, अब तक के जो बेस्ट फैंस रिएक्शन जो एक होता है ना कि लगता है कि यार अब तक मैंने जो इतना काम किया, एक ऐसा होता है, बहुत सारे आए होंगे लेकिन एक फुकरे रिलेटेड फैन रिएक्शन। या मेरे साथ ना एक्चुअली ये हुआ था where a girl came up to me. She was talking about Ambar Sariya, my favorite song, this, that, and all that stuff. And I'm very happy, obviously. I'm with my family in a parking lot in Delhi. And this girl comes up with two of her friends. And she's saying, yaar, Ambar Sariya is my favorite. Please, can I get one picture? Can you give me one autograph? सब किया, सब किया. अब autograph उसको मैं इधर पकड़ा रहा हूँ. उतनी देर में वो मुझे किस करके भाग गई. ओके। Yeah. And cut to this happened earlier. This happened after part 1. Then recently when we started the promotions of part 3, I was in Goa, and the same thing happened with me when a guy kissed me and ran. वाओ, दैट्स गुड। मैंने कहा ये बढ़िया है यार. बढ़िया। व्हाई नॉट? यस यस, हर तरह के लिए attractive role. 100%। So that did happen. Yeah, but after COVID a little kissing is little. चलो पार्ट 4 के वक्त Thank you for your love, guys. मेरे लिए for me it's mostly women walking up to me in like a mall and saying कि अरे मैं अपनी सास को ना ऐसे भोली जैसा जवाब दूंगी, बड़ा मजा आएगा। So I love that they have this anger that they want to express। वो मुझे देखते हैं पर्दे पे anger express करते हुए तो खुश हो जाते हैं। Okay. तो उनके लिए relief हो जाता है। मेरे को ऐसा को काफी हुए हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएटली मेरे दिमाग में आ रहा है। सो आई एम फ्रॉम जलंधर सर। जी। माय मम वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, तो उनका पूरे कॉलेज का एक गैंग है। सो अभी जब मैं रिसेंटली पंजाब गया था, जलंधर गया था, तो मम्मी की एक रियूनियन चल रही थी अपने 25 फ्रेंड्स के साथ। तो मैं अंदर घुसा और 25 आंटियां, मतलब इतनी दुआएं दी उन्होंने और ऐसे गोदी में बिठा बिठा के मेरे से बातें करी है ना। तो
वो मेरे को कभी नहीं भूलता, दैट इज दिस द लव इज सो प्योर एंड द रिलेटेबिलिटी फॉर द फ्रेंचाइज फॉर द कैरेक्टर्स इज लाइक कि ये तो घर के बच्चे हैं. सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड आई थिंक we just feel blessed कि that is something which is happening and it's got accepted in that manner.